वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रो चैनल पे। मैं हूं दानियल कुरेशी और आज हम लोग बात करने वाले YouTube प्रीमियर फीचर के बारे में। In this video, we'll give you an overview of YouTube Premieres, which is a feature that lets you and your viewers watch and experience your new video together. Here's how you can create a premiere of your own. You start by uploading a video just as you normally would. In the drop-down, select Scheduled. Now select the video you want to upload. While the video is processing, toggle on Premiere. Then, pick a date and time for your premiere. This is when your fans will watch your video for the first time. Next, fill out your title and description. And don't forget to select a thumbnail. Once the video is done processing, hit Premiere. As soon as you do this, a shareable watch page is created. This watch page is where the video will eventually premiere. Until then, you can use this page to engage with viewers and promote your premiere. Keep in mind that the watch page is public as soon as it's created. We have a few tips for promoting your premiere. To get your viewers excited, chat with them before and during the premiere. Don't forget, the watch page is shareable. Make sure to tease the premiere by sharing the URL in the community tab or across social media networks. Finally, remember to tell your viewers to set a reminder for the premiere. If they're subscribed, your viewers will also be able to discover the premiere by checking their subscriptions feed and your channel. Your video will have a premiere badge to indicate that it's an upcoming premiere. Here's another tip. Tell your subscribers to ring the bell to ensure they receive a notification. Okay, so let's fast forward to when your premiere is almost about to start. For viewers who have opted in, a tune-in notification is sent around 30 minutes before start. This helps ensure that your viewers are in their seats when the show is about to begin. At the premiere's scheduled time, a countdown begins and a second notification is sent to viewers who have opted in. Your premiere will also reappear in your subscribers' feeds. As soon as the countdown is over, your video starts playing and viewers will watch your new video together. This is an exciting launch moment for you and your fans, so be present. Fans love it when the creator joins in on chat during the premiere. As the creator, your chat will be highlighted at the top of the chat window for a few moments. If you're eligible, you can also enable Super Chat. Once the premiere is over, your video remains on your channel as a normal upload. You'll see that the watch page URL and the video URL are the same. Note that chat replay will be automatically enabled, but you can disable this at any time. And that's it! YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रीमियर। सो प्रीमियर मतलब जब भी आपने देखा होगा कि फिल्म्स वगैरह या फिर इवेंट्स तो उनका प्रीमियर होता है, ठीक है। प्रीमियर मतलब फर्स्ट डिस्प्ले पब्लिक के सामने, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि साथ में प्रमोशंस भी होते हैं उसके, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेलर्स और बाकी सब रिलीज़ करते हैं। सो वैसे ही यूट्यूब ने यहाँ पे एक अच्छा फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रीमियर, और जिसके तहत नोटिफिकेशन आएंगे सब्सक्राइबर्स को ऑलमोस्ट 2 बार, ठीक है। तो जब भी हम वीडियो शेड्यूल करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जब भी वीडियो शेड्यूल करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो जब शेड्यूल होगा मतलब जब अपलोड होने वाला है तब उसके आधा घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद में जब वीडियो पोस्ट होगा तो उसके 2 मिनट पहले एक और नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो जब 2 मिनट पहले नोटिफिकेशन आएगा तब एक काउंटर भी शुरू होगा। तो काउंटर एक्चुअली काउंट करेगा, मतलब अगर आप पोस्ट होने के पहले अगर चैनल पेज पे आके आपने देखा वीडियो पेज पे, तो वहाँ पे आपको एक काउंटर दिखेगा जो रिमाइंड करेगा कि इतने टाइम में वीडियो शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये फीचर को लॉन्च हुए 2 से 3 महीने हो गए आई थिंक। तो ये पहले फीचर सिर्फ बड़े चैनल्स को दिया गया था जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट सारे चैनल्स पे आने लगा है धीरे धीरे। तो हमारे चैनल में भी ये ऑप्शन आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा और इसे ट्राई करके देखते हैं। बाय द वे, यूट्यूब ऐसे ही अलग अलग फीचर्स लॉन्च करते रहता है जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसका जो एम है वो ये है कि क्रिएटर्स और व्यूअर्स को एक साथ जोड़ सके और ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सके। और साथ ही में ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से जो है यूट्यूब दुनिया का नंबर 1 वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो कि अच्छी बात है। और देखते हैं ऐसी अलग अलग फीचर्स की वजह से क्या होता है। तो चलिए अब हम ट्राई करके देखेंगे यूट्यूब का प्रीमियर फीचर और क्या होता है उसके रिजल्ट्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।